Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss most important topic of the Indian Constitution. It is fundamental rights. First of all, we must know the definition of fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are granted and protected by the Constitution. These rights are most essential for the all-round development of an individual. यानी कि ये ऐसे राइट्स है, ऐसे मूलभूत अधिकार है जो कि संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है और इंडिविजुअल के हर तरह का जो एक चहुमुखी विकास जिसे हम कहते हैं उसके विकास के लिए आवश्यक है. नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द fundamental rights? We see that in Indian Constitution, Part 3 of the Constitution deals with these rights, and these rights are given under Articles 12 to 35. In this regard, we must know that our Constitution makers has taken inspiration from the Constitution of USA. Now question arises, why these rights are important? These rights are important because they promote equality in the society and they protect the liberty and freedom of the citizen. And third is the most important, they place limitations on the action of state. In other words, they put limitations on the arbitrary actions of our legislature and executive. Therefore, they establish the government of law, not the government of men. Now, we see that in Indian Constitution, there were 7 fundamental rights. First was right to equality, right to freedom, and right against exploitation, right about the freedom of religion, cultural and educational rights, right to property, and right of constitutional remedy. अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बिकॉज दिस राइट वॉज डिलीटेड अंडर द 44th Amendment Act of 1978 and now it is a legal right under the Article 300A. तो आज की जो स्थिति में वो भारत के संविधान के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स है. Now we will see the main features of these fundamental rights. First feature is these rights are justiciable. It means these rights can be enforced by the courts. If there is violation of any of the fundamental rights of an individual, he can move to the courts for their enforcement. Second feature is these rights are not absolute but qualified. It means that state can put or the state can restrict these rights, but the base of this restriction must not be arbitrary. It must be reasonable. Next feature is these rights can be repealed or curtailed by the parliament, but not by the ordinary laws. It requires Constitutional Amendment Act.
Next feature, these rights can be suspended during the operation of emergency, national emergency, except Articles 20 and 21. We must keep one thing in mind, that 6 articles given under the Article 19 are suspended on the grounds when national emergency declared on the basis of war and external aggression, or the external emergency. These rights cannot be suspended if emergency is declared on the basis of armed rebellion. It means if the emergency is declared on the basis of internal internal factors, or if there is a internal emergency in the country, these rights cannot be suspended. यानी कि अगर मान लो भारत के अंदर जो आपातकाल है वो आर्म रिबेलियन के बेस पर लगा है, तो जो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स दिए हैं उनका सस्पेंशन नहीं होगा. Next features that some rights are available to the citizens, and some are only to the citizens, and some are available to the citizens and foreigners. अगला जिसका एक फीचर है, their scope of operations are limited by some articles. These are 31A, 31B and 31C. And their enforcement, or their application, the application to the members of armed forces, police, intelligence agencies, paramilitary forces can be restricted by the parliament. It means जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो ये कहती है कि जो इनका जो एप्लीकेशन है वो आर्म फोर्स के ऊपर, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर नहीं होगा. यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन जो है पार्लियामेंट लगा सकती है. इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And their application in the areas where martial law is in the force can be restricted by the parliament. तो इस तरह के जो एरियाज है जहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर भी इन फंडामेंटल राइट्स का जो एक एप्लीकेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ Article 12, most important. This article defines the term of state. कि state क्या है, राज्य क्या है. This article says that there are various things which can be included in the definition of the state. The first one is government and parliament, that is executive and legislative organ of the parliament, of the union government, not parliament, of the union government. Second is the government and legislature, state legislature, that is executive and legislative organ of the state government. Third one is the local authorities like panchayats and municipalities. And last one is all the statutory and non-statutory authorities. It means if these authorities take any action which violates the fundamental rights, यानी कि अगर इन अथॉरिटीज द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, दैट एक्शन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट. उस एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. Now, Article 13, most important, it says that the laws which are inconsistent with the fundamental rights can be declared void.
This article talks about the doctrine of judicial review. ये जो आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू की ये बात करता है. अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू is the power which is given to judiciary, under which it can examine the constitutionality of the executive action and legislative action of the state or the government. यानी कि इस पावर के अंदर के तहत जो जुडिशरी है उसके पास एक शक्ति है कि जुडिशरी जो कोई भी जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है लेजिस्लेटिव एक्शन को भी. लेजिस्लेटिव जो एक्शन रहता है मेनली जो लॉ जो बनाए जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो कोई भी डिसीजन रहता है उसको एग्जामिन कर सकती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को फॉलो करती है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न को जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करती है. तो ये एग्जामिन करती है. इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी. एंड we see in the Indian Constitution that there are two important articles. First one is the Article 32 and second one is the Article 226. Article 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करता है जिसके तहत जो व्यक्ति है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है वो इस आर्टिकल के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने जो राइट्स हैं उनको वो लागू करवा सकता है. एंड अंडर द आर्टिकल 226 अ पर्सन अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर हिज फंडामेंटल राइट्स. तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 26 एंड 226 एंड आर्टिकल 32. नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. The term law has been defined in the Article 13. There are various things which can be included in this term. First is the permanent laws. Permanent laws में include होता है those laws which are enacted by the parliament and state legislature. Second is the temporary laws. For example, ordinances which are issued by the president and the governor of the state. Third one is the statutory instrument in the nature of delegated legislation. For example, bylaw, notification, आपका order, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर आती है. And last one is the non-legislative sources of the law. लाइक कस्टम हो गया और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये लॉ की डेफिनेशन में आती है. इफ दीज थिंग्स और दीज ऑर्डर लॉ बाय लॉ नोटिफिकेशन आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एन एग्रीड पर्सन हैज़ राइट to move to enforce his rights through the courts. यानी कि अगर मान लो इन चीज़ों के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो इसके विरुद्ध वो कोर्ट जा सकता है. मीन्स दीज डिसीजंस, दीज लॉज एंड दीज एक्शंस, नोटिफिकेशन, ऑर्डर can be challenged in the courts if they violate the fundamental rights of the individual. कहने का मतलब ये है. तो आज जो हमने डिस्कस किया उसमें सबसे पहले definition of fundamental rights and constitutional provisions of the fundamental rights and importance of the fundamental rights. And then we discussed the important features of the fundamental rights. Then we discussed the definition of state, and then we discussed the definition of law, and
We have also discussed the concept of judicial review. तो आज का जो लेक्चर है वो मेरा यहीं पर समाप्त होता है. थैंक यू सो मच और नमस्कार.